shared, Hmm. yeah, I think you have shared a book with all of us in Unified that was about exactly, I don't remember the name of that book, but there was reasons of autoimmune disorders, Correct. No, no. spiritual reason. See, Yeah, I had shared 4 books in all. yeah, One was the exposing the spiritual roots of a disease. yeah, yeah. I remember it. Yeah, Okay. Exposing the spiritual roots of diabetes, exposing the spiritual roots of blood pressure, yeah. and exposing the spiritual roots of autoimmune disease. These are the 4 books I had shared. If you are not able to find them, I can send it again. Yes, sir. Okay. Now, in that mode of diagnosis, right, any spiritual roots of a disease is by virtue of 3 kinds of separations. Yeah, yes. Okay. Now, the first one is separation from what we call God. Okay. Replace God with separation from oneness. Okay, that means separation from nature. Nature is God for us, right? The second one is separation from ourselves. Oh, that's a very peculiar statement. How can I separate myself from myself? Can you Yes. think? Okay. Okay. Now, the third one is separation from others. Okay. 3 causes. Separation is From the root God. cause. Separation Yes. from God or oneness. Separation from ourselves and separation from others. Others. Okay. When I say separation from God, that means we are living considering either I am superior or I am inferior. I am not the same as everything else. Okay. I don't have faith. That means I am living in fear. Okay. Now, Exactly. I have fear. Right. no, लिख लो मतलब समझ में आ जाएगा आपको कैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं. The second one is separation from myself. Now, what is this separation from myself? My objective of life is being happy. Okay? I have to be happy. That means, what is happy, Aneeta? You need to define. Yeah, welcome, Ramakrishna garu. Okay. Yeah, What namaste. is happy, Aneeta, versus what is Aneeta? Okay, first frame में how are you living away from Right. the universe? Okay, you need to identify what are those areas. Then the second one is how are you living under stress? Because when you are
not living your happy self. You are the unhappy self, right? So you are living under unhappiness instead of happiness, Yeah. right? Now you are living away from others. Yeah. All three could be the same reason or different. Okay. Right. Now, so that is one root cause of a disease. So there are three reasons for a disease. That is now the Joe Dispenza's way of a disease is a disease is when you are vibrating at a lower frequency. Okay, which translates to in you said you are reading becoming supernatural, right? Supernatural. Yeah. Is there a circular Same. diagram energy to matter? Yes, sir. Right? What did you understand from it? It's a vicious cycle. When you vibrate on a low vibration, it attracts more low vibration events, peoples in your life Correct. until and So, unless you will not distract it. okay, very good. Right? He is also teaching you that two atoms becomes a molecule. Two Molecule. molecules will react amongst themselves, become a chemical. Yeah. Two chemicals, I mean, many chemicals will react and create a cell. Cell. A number of cells will create a tissue. A Tissue. number of tissues will create an organ. Organ. And, yeah, and a number of organs will create a system. System. And a number of systems will create a human being. Body. Correct? Body. Now, energy Right. can be introduced at every stage in this. Okay? Energy can be introduced at any stage. And that introduced energy will influence the outcome of the next stage. Yes, sir. Okay? Right. Third one. Diabetes as such is a metabolic disorder. It is not a Yeah. disease. Not a disease. Now, when I say metabolism, that means the food that you take in, the food that you take in has to be broken down into useful components and useless components. Useless. Useless has to be thrown out Mm. and useful has to be utilized by the body for its various systems. Systems. Okay. Yeah. A human body is equal to 4 core systems. Correct? Yeah. So, what are the core systems? You have 4 cavities that make up this body: Right. cranial, Cranial. cranial, Cardiac. Cardiac. thoracic, thoracic, Thoracis. then Abdominal. abdominal and pelvic. These are the Pelvic. four Yeah. core cavities in the body. These are the four Yeah. cavities in the Four body. cavities. So you have organs in each of these areas only. All the organs are distributed into these four. Yes. They are interconnected by nerves and nervous systems. Spiritually, we say they are interconnected by nadis. And you are undergoing the
energy to matter conversion as explained in Joe Dispenza's book. Okay, सही, एनर्जी से मैटर इंसान का शरीर बन रहा है, right? Now, this is the overall process. Now, another part, as we live in our life, there are certain avoidable and certain unavoidable experiences that we go through, right? Let me just see if I can take you through. And we are interconnected in this life by what we may call our interconnection is by means of emotions, right? If our interconnections are by means of one sec, why is this not visible? Let me just a bit. Give me a minute. I'm just trying to see if I can locate that. Okay. No, I'm not able to find that. So, right now, how is the body working? It is by means of energy, energy getting converted to matter, energy being influenced by additional energy, which is our thought. There are emotional outcomes, which we call, one sec, ये मिलना जरूरी है, नहीं मिलेगा तो मुश्किल है, एक मिनट, ये तो ढूंढना ही पड़ेगा. Diabetes, where is diabetes? Where is that? May not recover. I think this is the one. हाँ, वन से एक मिनट देना मेरे को. So what are you looking for? I'm looking for something nobody has. Oh, In the team, they don't have. okay. What are the different brainstem, pancreas, gland? इसमें है. ओके, इसमें है. हाँ, ओके.
इसको okay. Yeah, I found it. Now, every experience of our day to day life, one sec, ये क्या हो गया? Which screen are you able to see? I think पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही। नहीं, कौन सा स्क्रीन आ रहा था, मैं ये पूछ। सर उसमें कॉन्फ्लिक्ट का आ रहा था, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स। This चलिए। is the germ layers. Yeah. So every situation in our life, every experience that we go through our life translates to either I accept something or I don't accept something, Okay. right? When I don't accept something, it is a conflict, right? Right. That means you are interfering with atom to molecule, molecule Right. to, right? So you are in the form of that hurt feeling inside you, that conflict inside you. You are impacting the process of the working of your ectoderm, endoderm, and your mesoderm, correct? Yes, you are not aware of it, but right now in Unified chapter 5 or 6, मेरे को याद नहीं है, we talk about there is a natural creation and there is you as a creator. Instead of a Yeah. co-creator, you become the creator. Correct? Creator. Yeah. So now the various types of these impacts result in morsel conflict. I am able to digest, I am able to accept, or I am able to get impacted by without my knowledge. Think about Oh, the three messages that you got. yeah. What is the first one? The reason of disease, नहीं, then solution. पहले पहला नहीं, किताब वाला नहीं, जो आपको मेडिटेशन में तीन मैसेजेस मिला ना, महाअवतार या सर, बाबा जी, ये पत्री जी सेम एंड था। ऑल। जी सर, पहले उन्होंने रीजन बताया था कि एक बहुत बड़ा समंदर है आपके अंदर, जिसमें बहुत इतनी हाई आ वाइब्रेशन समंदर के इज साथ। वाटर, नहीं, समंदर वाटर। पानी है, वाटर। पानी इमोशन है, या ओके। इमोशन कौन सा चक्र के साथ जुड़ा हुआ है? सर, स्वादिष्ठाना, स्वादिष्टान एंड सोलर। सोलर प्लेक्सस, दोनों के साथ जुड़ा है। या सर, ये भी मुझे दिखाया था, सोलर। वाह, अभी याद आया दूसरा एक्सपीरियंस। राइट। ठीक है, तो सोलर या। प्लेक्सस एंड स्वादिष्ठाना, वो या। डिस्टर्बेंस है, वो लिमिट से ज्यादा हो गया, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो वर्लपूल बन गया। या। ठीक है, तो अब देखिए, कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, दैट मीन्स सही। देयर प्रोक्रिएशन सिस्टम इज फेलिंग, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ दैट। कहीं बैठे हैं, कोई बुजुर्ग आया और बोला, अरे अभी तक तुम्हारा बच्चा नहीं है,
right? The moment that happens, it impacts, right? The moment that happens, it impacts you mentally. So you are again interfering with atom to molecule, molecule to chemical, because your emotion is chemical in the body. Yeah. It is serotonin, it is melatonin, it is erupsin, it is various other things. It is also your Cortisol, adrenal, it is your cortisol. cortisol. Yeah. Correct. So if you resist something, it is going to interfere with this natural process and create a blockage in the functionality of the associated systems. Yes? Yeah. Yeah. Right? Now, there are separation conflicts. कुछ भी हो गया, right? You will withdraw. That is another kind of a conflict. The one in a relationship, attack conflict. कोई भी बोलो, जवाब में अटैक मिल रहा है, वो Yes, भी sir. गलत है, वो भी गलत है. All these conflicts, territorial. ये मेरा वर्किंग टेबल है, मेरी बेटी आती है, ये ले लेती है. यहाँ पे जितना मैंने अरेंज करके रखा है सब कुछ बिखर जाता है, मेरे को दूसरे जगह शिफ्ट करना है. आई एक्सेप्ट इट, फाइन. आई डोंट एक्सेप्ट इट. कुछ भी गलत हुआ, मेरी बेटी आई इसलिए गलत हुआ, Yeah. एक नफरत का माहौल बन जाता. I have faced this. राइट नाउ, Yeah. that is a territorial conflict. You are not accepting. So we encounter various kinds of conflicts which Yeah. alters the becoming supernatural. You are actually supernatural, but you don't let that function the way it is. I am continuously interfering with the process. Correct. So, right now, so we are understanding diabetes and the root cause from various angles. ठीक है. I mean, this diagram is not at over. ये इसीलिए वो एंडोडर्म का मैंने अभी लिखा नहीं है. एंडोडर्म का है आपका जीआई ट्रैक्ट, लिवर, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लैडर, विथ all these endocrine associated components happen to be your endocrine and mesoderm. All three of them get impacted. That means Yes, sir. that My thyroid is also impacted. correct. Reproductive system is also impacted. All the systems get impacted ना, एक variation के कारण. So now you have to understand and define your recovery journey. When you are defining your recovery journey, you need to understand that you are Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. Okay? Annamaya Kosha. It is a metabolic disorder. So, regulate your Annamaya Kosha. How are you going to do it? Change your dietary habits. Right? You don't need to eat 4 times a day. You need to eat when you are hungry. Right? So, इस तरह के variations, you need to first sit and identify where all you are deviating. What are all the conflicts in your life which are still active? Exercise 1, आज इसका लिस्ट बना के रखिएगा. 2 दिन के बाद में फिर से मिलेंगे. ठीक है ना? Ramakrishna sir, you can send her that Arshad Varga related workbook also.
Okay, sure. Also identify which are your deviations from your passions in life. And I will register you as a PG for our diabetes research. Yes, sir, I will. वो सुबह इंडिया के टाइम, इंडिया 6 o'clock का होता है, तो आपका कितना बजेगा? 5:30. हाँ, 5:30 कि 6:30? 5:30. 5:30, 5:30. राइट? दैट्स ओके फॉर यू, दैट टाइम Yes. जग Yes, sir. जाती हैं? ठीक है. Yeah. So we are currently, it is part of the diabetes thesis, as well as you are also a qualified doctor, Yes, sir. correct? You can also Yes. participate as a doctor in that Okay. research work itself. वो Sir, आपका, surely. I will. हाँ, वो आप रामकृष्ण सर को आपका नंबर मैसेज कर दीजिए, जी सर. so that सर, he will एक be. जो विजन मैं भूल गई थी आपको बताना, जो अभी सोलर प्लेक्सिस का आपने बताया, तो मैं मातार बाबा जी से कनेक्ट हुई. आई सेड, बाबा जी, मुझे बताइए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, राइट? क्योंकि मुझे ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस है, ग्रेव्स डिजीज, राइट? एंड मैं उस पर वर्कअप करना चाह रही थी. तो मैंने कहा बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है, क्यों ना मास्टर से कनेक्ट किया जाए, राइट? तो उन्होंने मुझे सोलर प्लेक्सिस दिखाया. मैंने कहा बाबा जी, आई कांट अंडरस्टैंड इसका हमारे ऑटो इम्यूनिटी से क्या रिलेशन है, राइट? उन्होंने दिखाया एक लोटस फ्लावर है, कमल का फूल है, वो ऐसे गिरा पड़ा है, मुरझाया हुआ है. मैंने कहा बाबा जी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा. उन्होंने वो लोटस फ्लावर जाके मेरे इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया. उन्होंने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ पे प्रॉब्लम है. मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो जाऊंगी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने, जो मुझे अब नहीं करनी. मैं स्पिरिचुअलिटी में इन हो रही हूँ, तो मुझे आपसे गाइडेंस लेनी है, राइट? उन्होंने मुझे दिखाया तुलसी के पत्ते, हल्दी, और एक और चीज थी. उन्होंने कहा एम्प्टी स्टमक ये लो, होगा राइट? नींबू या अदरक? अदरक, अदरक, सॉरी, अदरक था. अदरक था, राइट? तो ये तीन चीजें उन्होंने मुझे बताई कि आप लेना स्टार्ट करो. और फिर मुझे दिखाया कि वहां से वाइब्रेशंस, जो एक, यू कैन से रेज थी, जो मेरे इंटेस्टाइन से मेरे पेनक्रियास तक भी जा रही थी, थायराइड तक भी जा रही थी, मेरे ब्रेन तक भी जा रही थी. और फिर उन्होंने कहा कि इन सब पे गोल्डन पिरामिड बिठाओ. हम्म, बोलो बोलो बोलो, आप बोलते जाओ, जी. मेरा फिर स्क्रीन मत उन्होंने ये देखो. फिर उन्होंने मुझे ये बताया. मैंने कहा अच्छा, फिर क्या होगा? तो मैंने देखा कि मैंने जैसे गोल्डन पिरामिड रखे, वो ब्लैक होके गिर गए. हम्म. फिर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि आपकी जो हम्म. बॉडीज हैं, 7 बॉडीज बॉडीज दिखाई, वो ब्लैकिश हो रही हैं सारी. हम्म. फिर मेरा बच्चा आ गया, मेरा ध्यान टूट गया, आगे उससे मैं नहीं वो कर पाई. तो ये देखा था मैंने. हम्म. समझ में आ रहा है इनका मतलब क्या है? सर, अब जो मुझे आप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, कोई इन चीजों को नहीं, मतलब वो, तो मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे अब समझ आ रहा है. क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने सारे बुक्स में लिख दी है अपने रजिस्टर में, कि ये क्या है इनका मतलब. मुझे जो इतना डिकोड की करके बता रहे हैं, इसका कोई तो रीजन होगा. फिर उन्होंने कहा आपको एक बुक लिखनी है, हम्म. इसी पे इसी पे जो आप एक्सपीरियंस कर रही हैं. मुझे फिर भी समझ हम्म. नहीं आ रहा था. बाबा जी ने स्माइल किया और हैंड रेज किया कि सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सब बताता हूँ. और वही मैसेज जो मैंने आपके सामने रखा, आपने इतना उसको ब्रीफली और सिंपल वे में समझाया है कि मतलब मैं इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए भी, मुझे खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और मेरी जो आगे इन फ्यूचर जो मुझे बुक उन्होंने बताई है कि आपको लिखनी है, उसमें भी टाइटल इमोशन का ही है, पहला चैप्टर. ठीक है, चलिए, मेरे को भी मौका मिलेगा आपके साथ काम करने का.
जी सर, तो ये मास्टर्स की ही गाइडेंस है कि कैसे मैं यूनिफाइड से बाबा जी की हेल्प से आपसे जुड़ी, और आज देखिए ये इतना आप उसको अनफोल्ड करके चीजों को सामने रख रहे हैं। और मुझे ये भी बताया था कि आपको कोई लफ्ज कहीं से चीट नहीं करना, किसी की नॉलेज को कॉपी करके उस बुक में नहीं लिखना। नहीं नहीं, आपको जब देख तक देखो, नहीं नहीं, अगर आपको कुछ भी काम करना पड़े, राइट। मैंने हिंदी में सेशंस किया था, ये संगिनी के लिए अपने, उसमें कुछ ज्वाइन किया था नहीं ना? नहीं सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। डॉक्टर रितु जी के लिए चक्रास पे अच्छा। मैंने किया था सेशंस पूरा। राइट। ठीक है, तो अब देखिए, ये हो गया आपका चक्रास। तो सर, ठीक है। इससे देख के एक और एक्सपीरियंस याद आया मुझे, जो आपके डायग्राम है इसी को देख के। उन्होंने बताया था यहाँ पे जो वो पहले जमाने में आटे के लिए वो करते थे ना, जिससे आटा निकालते थे, उन्होंने मुझे वो गोल्डन दिखाई। हम्म। राइट। उसमें जो हम्म। आप अन्न डाल रहे हो, वो अन्न ही आपके सोलर से कनेक्ट हो रहा है और वो ब्लैकिश हो रहा है। हाँ, ये भी तो जो एक्सपीरियंस अन्न हुआ डाल था। रहे हो, चेंज योर जी। डाइटरी पैटर्न। वो मैं डाइट का क्या है वो हम लोग कल या परसों बैठेंगे तो उसमें बात करेंगे, राइट। तो आप देखिए, ये है, आपका शरीर ऐसा नहीं है। आपका शरीर इज ए कलेक्शन ऑफ 150 to सेल्स। 150 ट्रिलियन सेल्स, सेल्स। डिपेंडिंग अपॉन सेल्स। योर बॉडी साइज, बीएमआई वगैरह वगैरह पिक्चर में आएगा। राइट। तो यहां पर देखिए, हाँ, राइट, ये हो गया आपका चक्रा फंक्शनिंग। या। हो गया आपका थॉट प्रोसेस एनर्जीज, हर राइट। एनवायरमेंट के लिए। ये हो गया मूलाधारा, ये हो गया स्वादिष्ठाना, ये हो गया। अब बीच में, अगर यहां पर मैं बीच में ले आके, राइट, हाँ, ये सही है, इसमें वो इंटीग्रेट कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया, राइट। ऑल दीज आर either your willpower or your spiritual information. That means this is what your body is telling you, your body mind. This is what your spiritual mind is telling you. And this is how all those chakra energies are creating this physical body. Okay? राइट। Matlab, that means all these energies are entering your body at various points and influencing that particular organ, right? या। ठीक है, and this is becoming your conflicts. All these are eventually becoming the organs of the body. Got it? यस सर। आपका ऑर्गन कैसे बन रहा है? इसी में से बन रहा है। So how many areas you have for correcting that so that this will become normal? हम्म। ठीक है, ओके। So you have all these systems in the body, and malfunction of these bodies are going to manifest in your day-to-day life. Your experiences of life are going to be in these kinds. इसका equation बनाओ. All this is going to be the spiritual tablets research book that is going to come out. वाओ। सर, इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे जो विजन में आए, बट मैंने लिख डाले क्योंकि मुझे नहीं पता था उनका क्या होना है।
ये चीजें देख के वो मुझे सारे क्लिक आउट हो रहे हैं कि जो मुझे बताया गया था वो क्यों बताया गया था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, या 1 साल पहले, आप जो मैं कर। ढूंढोगे तो आपके बचपन से आज तक आपके जितने भी अनुभव हैं वो सब काम आएंगे। आपने सब जो भी सीख रिलेट कर लिया, रहे हैं सब। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ये मुझे क्यों, ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर एक को ऐसे ही होता है। एज यू आर स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग, एदर यू लर्न एंड यू इम्प्रूव, और यू बिकम एरोगेंट एंड सफर मोर। हर डिजीज का मैपिंग इन्हीं के साथ। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं। ठीक सर। ठीक है। दिल नहीं चाह रहा बंद करने को सर। मेरे साथ जो भी लेक्चर में जुड़ोगे, यही तकलीफ है। ना मैं बंद करता हूँ, ना दूसरों को बंद करने देता हूँ। दोनों ठीक नहीं है। बस। सर शायद बाबा जी ने ही मुझे जैसे कहा था कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ और आप अनफोल्ड कर रहे हैं उन चीजों को जो मैं बाबा जी को कह रही थी मुझे नहीं पता पड़ रहा, आपने क्या दिखाया है, क्या दिखाया है, वो देखें कैसे अनफोल्ड हो रही। हम्म। So, Aparna ji, so, no, no, you are Anita, Dr. Anita ji, you are a great asset to the team. So I will add you to the WhatsApp group. है So सर। please give, no, you give me आपका your phone नंबर दे number. दीजिए यहाँ पर, यहाँ इसी जी। चैट में दे दीजिए, सर ले लेंगे। जी सर या आप मैं दे बोल दी सर। दीजिए, सर लिख लेंगे। विच इज 0336। Excuse me, ma'am. इट इज +92। यस सर। I think the name I remember is Dr. अनीता। Anita Rathore. यस सर। Rathore is a common name in Pakistan, यस सर। because कास्ट। I have met a number of people during my journeys to the UK and US. I have had passengers whose second name has been either Rathore, or the other one is Patwari. Is it Patwari? यस सर। Yeah. Okay. So the number is Ramakrishna Garu. Yeah, You write down. yeah. It is Three. +92 double three Okay. six Yeah. 086 5398. Okay. So 336086539 and +92. Correct. Okay. Okay. So that we meet every Thursday. ओके We सर। will do two things. We will analyze the PG also through our spiritual tablets experience, using Anita as one of the PG as well as a doctor, both. यस सर। सर आई हैव सो मेनी पेशेंट्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम blood pressure, diabetes, infertility because of thyroid No, no. issues. See, that is what, one by one we will address them. Okay, sir. Hmm. And then if we are successful, we can then take it to the next level. Okay, sir. Okay. Welcome, ma'am. Very good. Attend also, attend.